Well, obviously मैं बहुत excited हूँ. ये मेरे लिए सबसे बड़ा opportunity है जब से मैं इंडिया आई हूँ. And मैं बहुत thankful हूँ क्योंकि शाहरुख ने मुझे ask किया कि मैं इस film का गाना करूँ या नहीं. I mean, it wasn't even a question whether I would say yes or no. But मैं बहुत excited हूँ and मुझे पता कि ये song already लोगों को पसंद है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है already. So अभी ये मेरा मैं nervous हूँ that वो जो visuals हमने create किया लोगों को वो पसंद आए. So अगर दोनों को पसंद आए then we're good. And obviously I want to reach those those expectations जो at least in my mind जब एक बड़ा production house or Shahrukh up gives you a song like this that I meet those expectations. वो सही नंबर कॉल किया था. मुझे कॉल वो मेरे like they were talking about me. So मैं थोड़ा सा disbelief में थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे कॉल कर रहे थे. And in all seriousness मेरे expectations in life or just in general they're not very high. मुझे सिर्फ ये करना कि मैं काम कर रही हूँ, हर रोज़ काम कर रही हूँ. But an opportunity like this was, it's a dream come true. It's something that dreams are made of, इस साल ऐसा था, ups and downs, बहुत अच्छी चीज़ें हुए इस साल में, and not so अच्छी चीज़ें भी. But I think that's life. Life journey ऐसा होता है कि ups and downs होते हैं. And yes, of course, इस साल बहुत special है मेरे लिए क्योंकि finally मेरे भाई का शादी हो गया. जब से मैं इंडिया आई हूँ मैं हमेशा से guilty feel कर रही थी क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ और हमारे parents नहीं हैं. And I would always feel bad कि मैं उनको emotionally या मैं वहाँ नहीं हूँ. So that guilt was always there. But then when he met his now wife last year Diwali time, it was nice to know that he has found somebody. So I hope that they always stay happy. और शादी बहुत अच्छी तरह हुआ था. It's a very small wedding. I'm so happy that वो अमेरिका में हुआ क्योंकि I love everybody, but मुझे एक big fat Indian wedding नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे dance करना था, मुझे मस्ती करना था, मुझे जो भी मैं करना चाहती थी मुझे वो करना था. ये जो I have to sit proper, have to say hello, have to do this, वो सब चीज़ें नहीं थी. There was obviously all the right जो भी मैं कर सकती थी भाई के लिए, and also for my sister-in-law, we tried our hardest to do to the best of our ability. मैंने मिसेस खान को दिवाली टाइम में उनको मीट किया था and I asked Shahrukh and her गाना कैसा लग रहा है, and he said it looks amazing, and then she also said it's looking great, it's looking beautiful. So वो मेरे लिए एक बड़ा compliment है क्योंकि when a woman says something like this, you take it in a different way because she's also seeing it from the outside. So मैं बहुत खुश थी that she said something so nice. Yeah, of course, मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm looking forward to watching this film. I know that जब मैं Daniel के साथ बात कर रही थी इस ट्रेलर के बारे में, even he said the amount of people and the buzz and the interest level for this film is very high. And वो भी हिंदी समझते नहीं है, लेकिन उनको भी अच्छा लगा, so that's a good thing. Well, ये गाना मेरे लिए obviously सब ये मान सकते कि मेरे लिए सबसे बड़ा गाना है up until this point. So I see it as
the golden ticket to Disneyland. The doors of Disneyland open. So I wanted to make sure that जो भी मैं कर सकती थी, जितना एनर्जी दे सकती थी, मैं इस गाने के लिए to give as much as I could, because not only for the film, not only for Shah Rukh, not only for Excel or you know story के लिए, ये मेरे लिए सबसे important moment है, and of course I wanted to give it my all. मेरा experience बहुत amazing था. I had him here on a pedestal, and जब मैंने उनके साथ काम किया and बातें की, he went above and beyond that. क्योंकि when you see someone on TV, जब आप TV पे देखते या movie theaters पे या interviews देखते, you have a certain level of like respect and also admiration, all these different things. But then जब आप अपने आप meet करते, it's a different level. You understand वो उस level पे क्यों है, because of his charisma, his professionalism, his dedication to his work. I think सबको मालूम है that जो भी शाहरुख खान करता है वो सबसे best होता है. In life there's few people that are just, they're good at it all. They're good at being charming, they're good at dancing, they're good at acting, सब कुछ. So we all know what level he's at. Of course, अगर मुझे एक opportunity मिलता है, of any actor, any actress, anybody would love that opportunity. Right now मैं ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए that I get to be in a song with him. So if it all ended, अगर आज सब कुछ end होता है, then मैं खुश हूँ. So I'm happy with this moment. Christmas मैं काम कर रही हूँ. I'll be flying from Mauritius to Bangkok to work, and New Year's के लिए भी काम कर रही हूँ. I'll be performing in Calcutta.